What is up, you guys? Hi, I'm Vitasta. Welcome and welcome back to my channel. I am reporting to you straight from Istanbul. It's my fourth day in Istanbul and things have been going so great. I actually really like it. It reminds me of so many places I have already been to. The vibe of this place is amazing. The reason why there's no proper vlog of each day and everything is because my uncle actually lives here and I'm staying with him. He's out to work every day like until 2 or 3, and then we go out and just do uncle niece things, and I just don't feel like I should bother him with my vlogs and all. I don't think he hates it. I personally feel like it would be good if I don't shove my camera in his face all the time. I've taken small clips of everything to show you guys, don't worry about that. But yeah, that's the one reason I was not vlogging like that. And also I did not want to vlog because I have been working tirelessly for the past few months and I wanted this vacation for myself, like for my peace of mind, and just chill without having the tension to record everything. Just be in the moment and enjoy. That's what I wanted to do. But this vlog is a special request from my mother. She's told me like so many times, 100 times, she said ki vlog karke aana, vlog, please vlog blah blah. So I was like, okay, this is for my mom. Okay, so first things first, so this is my uncle's place. It's like a really huge apartment, like really nice. They have the cutest dog in the whole world. His name is Gofret. He's the cutest. He's so cute. Hi, Gofret. Hi, Gofret. Govi. Everyone knows that I am a cat person. I am not a dog person. I don't hate dogs, but I just I would stay away. But Gofret is so adorable. He's so cute. He's the cutest and the most decent and well-behaved dog I have ever seen in my life. He's just so adorable. My uncle wakes up very early, like he wakes up at 4 or 5 I think, and then he goes to work out, he meditates and everything, and then he leaves for work at around 7:30 or 8. I have been waking up at 9. I am trying to reduce the hours and wake up earlier so I have like more to myself, but even today I woke up at 9. Sorry. Every day has been really different. One day we had dinner with my uncle's friends and went to a mall and got some shoes and stuff. Then next day we went to another mall and we went to Bibek, which is it's like a port where all the yachts rest, and we were just walking around like it's like Marine Drive. And yesterday we went to Taksim Square and Blue Mosque and Grand Bazaar and bought some souvenirs for everyone. Coffee, come here. Yesterday I also went to Starbucks, did some edits and had black coffee. My uncle is really diet conscious, so he's just making me quit milk forever. So yeah, I am having black coffee now. I'm that girl. Today also Today we're going to visit my uncle's friend, and then we are going to Soho House. So it's Friday night, so let's see how Istanbul elites party. It's almost 9:50 and around 10 Tuba comes, who is my uncle's housemaid, and she does everything. She cleans and everything, and then she cooks breakfast for me and food for Gofret and everything. Before she comes, I'll just show you around. This is Gofret again, and this is the living room, guys. It's like a big living room where we sit there and have our dinner. So I hope from here you can see the whole room. So this is the living room. This is the stuff we shopped yesterday. My uncle did. It's a mirror. Hello. So this is a night suit from H&M. Yeah,
Okay, I love this place. It has these little decorative things, and he's kept it so nicely. Like everything vibes so much. Is just exactly my uncle's vibe. Very bright and brilliant, and he likes bright colors, crazy stuff. This is actually the entrance. Here is another mirror, and these are all my shoes. Just my shoes, not his. And this is the kitchen where Tuba will come. So there's nothing much to show. And we enter the hallway. Then this is his closet. What happened? Gofrat khasi kar raha hai. Kya hua Gofru? Kya hua Gofru ko? Lot of clothes. He's just like me. Here is his room. There is Gofret's bed, and yeah, I'm not gonna go inside his room. Here is the bathroom. Look at the mat, it's so pretty. There's a huge ass mirror. Here is the wash basin, and here is my little stuff, my super essentials: makeup remover, face wash, deodorant, and toothbrush. This is my shampoo, conditioner, and hair mask. तो इसको ऐसे खोलते हैं. इसमें से 3 बॉटल्स हैं. ऐसे इतनी सी बॉटल है, बट इनफ फॉर लाइक 3 times. And here is my room. Are you ready? It's nothing special actually. It's just with a lot of saman here, like so much saman. And here is where I sleep. This is the bed that I have to make. This is my side table with my essentials, my vitamins and stuff. This is a mirror. I brought so much stuff वहाँ से. मुझे इतनी टेंशन हो रही है. How do I pack it all back? Like I am in distress, especially after shopping so much. This whole area is what I shopped and will not fit in the bag. All my clothes, so many clothes, man, it's cold. So here is the room where I sleep in. The most exciting thing happened to me yesterday, like so random. We were walking down the street for the Blue Mosque, and there were actually many camera shops in a line. Just one day before, I was telling my uncle that I need this camera, Panasonic Lumix GH5. I needed it so bad, like मतलब मुझे वो ही कैमरा चाहिए था बहुत टाइम से. एंड आई wasn't getting it just yet because that camera is really expensive and I needed to save up some money. So I was like, it's so expensive, मैं क्या करूँ. मैंने उनको बताया कि I'm just saving it up and stuff. We were just discussing it, and next day I just see this camera shop and I was like, you know what, who cares, let's go inside and just check क्या हो रहा है यहाँ पे. So I went in the camera shop and then मैंने उनको पूछा कि आपके पास ये कैमरा है या नहीं है. उन्होंने कॉल लगाया and then they were like, there is this camera, the same camera with a big lens which is available, but it's like 6 months old, hardly used, and it's almost brand new, and it was at almost half the price. Like half the price is a lot, because that camera usually in India goes up to 2.8 तक if you get that big lens. यहाँ पे I got it for 117 or something. वो चीज़ इतनी जल्दी हुई. I could not believe it. That was something I wanted to save for later, like बाद में करूँगी. It was gonna be a big deal. But yesterday it just happened like that. ऐसे हुआ जैसे it was meant to happen. Like okay, ठीक है, मिल गया कैमरा. Proper vlogging मैं घर से ही चालू करूँगी इस कैमरा के लिए. I have to learn so much. There's no box जिसमें instructions and all लिखी हो. I just got this camera like that, and उसके साथ उन्होंने batteries भी दिया, charger दिया and everything. This is my camera. I'm so happy. Like I'm just extremely happy about this. This is my dream camera. I wanted this for so long. I am the luckiest person alive. ऐसा मुझे लगा. कल I would pay anything to get this camera. Enough chit chat. It's time for Tuba to come and she will cook breakfast and clean everything. Tuba ने मेरे लिए breakfast बनाया है and it's roasty. This is what I've been eating for 3 days. Some strawberries. यहाँ के मैं सिर्फ healthy खा रही हूँ. Like I am so proud of myself. Let's nature know we can do anything she can. Well, I'll take one to go. So I'm back. It's almost 1. I have to do my skincare, eat lunch, get ready. Such a busy life. So my skincare जो है अपना, I've got it in this bag. Voila. That's all my skincare. Just cleansing, toning, and hyaluronic acid, moisturizer, and sunscreen.
हाइलुरोनिक एसिड जरूरी है। कॉफी इट्स रियली कोल्ड आउटसाइड। आई बीन यूजिंग बेनिफिट का न्यू पोर प्रोफेशनल मॉइस्चराइजर क्रीम। टू बी ऑनेस्ट इट्स रियली गुड, लाइक इट मेक्स योर स्किन इंस्टेंटली स्मूथ एंड ऑल। फाइनली सनस्क्रीन, मैं ये नहीं भूल सकती, पिछले कुछ दिनों से आई एम नॉट री अप्लाइंग माई सनस्क्रीन। लाइक सनस्क्रीन लगाती हूँ, फिर 2-3 घंटे बाहर और फिर धूप में भी घूमती हूँ एंड मैं री अप्लाई नहीं करती। उसकी वजह से मुझे यहाँ थोड़ी बहुत फ्रेकल्स अपेयर होना स्टार्ट हो गए हैं। फिलहाल तो मैं विश केयर का सनस्क्रीन लगा रही हूँ, ये इसलिए बिकॉज इट्स वेरी लाइट वेट एंड SPF 50 भी है। Now what I have to do is influencer life. I have to post some pictures on my IG. 31st March है, so I'll post a March dump. उसके बाद I have to post like a short YouTube short. Then I'll eat food and I'll get ready. Before I actually start getting ready, I'm eating my lunch. Healthy food all the way. मुझे लग रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ बैठ के रील्स देखने लगी, उसमें मेरे कुछ 20 या 25 मिनट वेस्ट हो गए, तो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। इट्स 2:48 and I have to leave at 3:30. So कर रही हूँ, मुझे टैक्सी नहीं मिल रही है, मेरा उबर नहीं चल रहा है यहाँ पे, सो आई एम वेटिंग फॉर अनदर टैक्सी। तो मैं स्टेशन जाऊंगी। आई एम ऑल्सो वेरी लेट, मैं क्या करूँ। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, मैं अपने अंकल की फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ एंड आई एम ऑलरेडी काइंड ऑफ लेट। आई शुड हैव बीन देयर लाइक अराउंड 10 मिनट्स अगो। अब मेरे को उबर नहीं मिल रही थी, मेरा उबर का कुछ पेमेंट का इशू हो गया था, द कार्ड्स इन इट आर नॉट वर्किंग। मैंने अपने अंकल को बोला कि आप अपने ऐप से बुक कर दो। वो जहाँ मेरा वेट कर रहा था मैं वहाँ नहीं थी, फिर मुझे अंकल ने कॉल किया कि वो तेरा वेट कर रहा है वहाँ पे, तो मैं वहाँ गई तो वहाँ नहीं था, मुझे वो टैक्सी वाला दिखा ही नहीं। मैंने अंकल को बोला मुझे टैक्सी नहीं मिली, तो वो गुस्सा हो गई, लाइक कि तुझे टैक्सी भी पकड़नी नहीं आती है और उधर। तो मेरा ईगो हर्ट हो गया, तो मैंने बोला ठीक है रहने दो, मैं खुद देख लेती हूँ। दूसरी टैक्सी पकड़ी और मैं डायरेक्टली आ गई। पहले मैं मेट्रो के थ्रू आना चाहती थी, बट अब इतना लेट हो गया कि मैं डायरेक्टली जा रही हूँ। मैंने बोला जो उनकी फ्रेंड है कि थोड़ा लेट हो गया, आई एम सो सॉरी। शी इज लाइक इट्स ओके इट्स ओके। मुझे ट्रूली ऐसा लगता है कि मैं कैसे घूमूंगी यार अकेले, मैं टैक्सी तक नहीं पकड़, लाइक थिंग्स आर नॉट इजी फॉर मी। कुछ करना हो कुछ नया, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ अकेले। बस यही लर्निंग एक्सपीरियंस है। मैं एक्चुअली चाहती हूँ मैं लाइफ में एक बार तो कुछ सक्सेसफुली करके देखूँ कि यस मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गए। बाय द वे सामने का रास्ता कितना सुंदर है। गिजान से मैं निशांत आशी में मिली, विच इज़ काइंड लाइक बांद्रा। काफ़ी गुड वाइब्स थे, काफ़ी लाइवली था। एंड फिर मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए क्योंकि गिजान बहुत इंसिस्ट कर रही थी, पर मुझे मेरा कोट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक होल आउटफिट वाज सो बैड, सो आई वाज a little insecure। थोड़ा बहुत वॉक करने के बाद वी हैड टर्किश कॉफ़ी एंड हम दूसरे फ्रेंड के घर चले गए टू हैव डिनर। शी हैड 2 cats and they were so adorable। फिर खाना खाने के बाद मैंने रेड लिपस्टिक लगाई बिकॉज हमें सोहो हाउस जाना था, सो डे टू नाइट लो वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करना अलाउड नहीं है, सो आई डोंट हैव मच टू शो यू, बट द वाइब्स वर गुड। ठीक ठाक था माहौल एंड बहुत ज़्यादा बड़ा क्लब था, कुछ 3 या 4 फ्लोर का। वहाँ पे सिर्फ लाइव म्यूजिक चल रहा था, सब टर्किश में ही गा रहे थे, पर लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। Then we got back home and by the way मैंने ज़ारा से नया कोट ले लिया था। मुझे सच में मेरा कोट बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था क्योंकि वो आयरन नहीं था। ये वाला तो बहुत सही है एंड इट्स वार्म टू। देन मैंने एज़ यूजुअल मेकअप रिमूव किया अच्छे से, पूरा नाइट रूटीन किया, ब्रश किया और स्किन केयर किया एज़ यूजुअल। फिर मैं सो गई और ये है नेक्स्ट डे। आई वाज गोइंग टू तकसीम स्क्वायर फॉर अल्टीमेट शॉपिंग ऑल बाय माई सेल्फ, इसलिए थोड़ा सा नर्वस थी। मैं पहले रेडी हुई अच्छे से एंड देन मैंने ट्रेन पकड़ी। फुल मेन कैरेक्टर मोड पे थी मैं उस दिन। तकसीम लुक्स सो अमेजिंग दिन के टाइम पे। मैंने उस दिन काफ़ी शॉपिंग की, मेकअप एंड शूज़ वगैरह लिए जो इंडिया में नहीं मिलता है, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली
के लिए गिफ्ट्स लिए काफ़ी सारे। बाकी शाम काफ़ी मनहूस थी, डिटेल में नहीं जाऊंगी बिल्कुल, बट एनीवेज बाकी का जो थोड़ा बहुत टाइम था आई स्पेंट विद गिज़ैम, कॉफ़ी और बातें करते करते। इन 2 days वी लेफ्ट फॉर कैपाडोकिया। दैट वाज a 7-hour ड्राइव। वी लेफ्ट प्रीटी अर्ली, तभी मैं ऐसी दिख रही हूँ। वी स्टॉप्ड एट मेनी प्लेसेस फॉर वॉशरूम एंड टी एंड स्टफ। मौसम बहुत प्यारा हो रहा था आफ्टर डेज ऑफ रेन एंड क्लाउड। वी प्लेड हिंदी सॉन्ग्स ऑन आवर वे और गाते गाते जा रहे थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। I was already feeling so good after my shitty day that I mentioned before. जब हम कैपाडोकिया पहुँचे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हुई मुझे, इन अ गुड वे। कैपाडोकिया बहुत यूनिक और सुंदर जगह है एंड बहुत ज़्यादा मिस्टिकल, बहुत हिस्ट्री है इसमें। मे बी सबको पसंद ना आए, सबकी वाइब ऐसी नहीं है, बट ये मेरी सबसे फेवरेट जगहों में से एक बन चुकी है। चेक इन करने के बाद हम हिल पे चले गए जहाँ से सारा शहर दिखता है एंड सारी वैलीज भी दिखती हैं। बस मन कर रहा था वहाँ बैठ के सिर्फ सनसेट देखूं चुपचाप। शाम को भी कैपाडोकिया इतना सुंदर लग रहा था लाइटिंग में, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पेंट किया हो ये सब। बाकी के दिन हम अंडरग्राउंड सिटीज गए और म्यूजियम्स में भी गए। यहाँ पे भी बहुत यूनिक एक्सपीरियंस हुआ। या यू हैव टू वॉक अ लॉट श्योर, बट इट्स वर्थ इट 110%। वन डे वी ऑल्सो वेंट ऑन अ हॉर्स राइडिंग ट्रिप टू रोज वैली एंड रेड वैली। जो पूरा रास्ता था I was just staring in awe of the beautiful meadows और जो पूरा इतना सुंदर नज़ारा था मेरे सामने। I was just looking at it। मुझे meadows बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक मेरी फेवरेट प्लेस है वो। एंड खुली हवा, सुंदर ट्रेल, बिल्कुल एक मूवी जैसा लग रहा था मुझे। I was smiling the whole time, being in nature, climbing hills, taking it all in, feeling the positive energy all around. You can genuinely see the happiness on my face. I think that day healed a little part of me. I was so quiet and happy from the inside, happiest I had ever felt in months probably. The whole trip was a core memory and I will never ever forget it. You've been gone for so long, forgotten what your face looks like, what it feels like. So finally it is my last day in Istanbul in Turkey and I'm leaving for India in a few hours. What a trip. Like, oh my god, I feel like a changed person, especially after Cappadocia. Not, describing in detail anything, but I am my thinking process, how I handle things, my perspective in life, everything is different now. I feel amazing. This is actually the first trip in my life where I feel excited to go back home. It's not कि मुझे यहाँ मज़ा नहीं आया. It's not like that. I'm also very eager to meet my parents, my family, my friends and everyone. Like, I'm so happy. इस्तांबुल में एक चीज़ बुरी हुई. It's my skin. I hope you can see, like, I'm freaking tan. Like, I'm so tan. So I have like breakouts. अभी तो काफ़ी ठीक हो गए हैं, but I had breakouts. I am gonna miss him so much. This little goofball, this little kaku. Also, last week I lost my credit and debit card and also my driving license, but I'm not freaking out or crying about it. Yeah, I will head back to India and I hope I post this vlog on time. This is a very different vlog than what I usually do and I really hope you all like it. Thank you so much guys for making me able to do all of this. It's all because of you. I am taking a vida from Turkey. Teşekkürler. I love you so much. Mwah. Bye. Bye. Call your name out till you fall and tell me one more time you're not coming home.